Hi, greetings from SDMIC classes. My advice is nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. We are continuing with our chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts, part 11. This is the 11th class. Hope you must have watched the previous classes. I believe you all must have understood. I request you to pay attention. Let us continue. We were discussing some important adjustments in the final accounts. Which account to take it, whether to debit profit and loss account, trading account, or credit trading profit and loss account, or whether it is a revenue item or a capital item, revenue expenditure or capital expenditure, or whether it is a balance sheet item. If it is a balance sheet item, whether to take it to the asset side or liability side. This we were discussing. We have discussed 20 points. So now let us continue with the other parts, but let us see what we have learned. The headings wise we can just see. We will see that the 20 points we discussed were closing stock. These are the important adjustments coming in the final accounts once we prepare the first trial balance, and after that if these adjustments are coming, these adjustments entries are either to be passed to the books of accounts and then take a final trial balance after the adjustments, or if it is not able to just pass through the books of accounts, and a balance sheet or a trading and profit and loss account and a balance sheet is to be prepared from the first trial balance with these adjustments to be incorporated, then these are the entries to be passed. These are the important adjustments. We discussed 20 points. One, closing stock. Second, outstanding expenses. Third, prepaid expenses. Fourth, income received in advance. Fifth, income receivable. Sixth, bad debts. Seventh, provision for doubtful debts. Eighth, reserve for discount on debtors. Ninth, depreciation. 10th, 3 points are there. Interest on capital, interest on drawings, interest on loan taken. Then 11th point, interest on investments or loan given. 12th, there are two adjustments: insured goods destroyed by fire or accident, uninsured goods destroyed by fire or accident. 13 point, goods stolen. 14 point, goods distributed as free samples. 15 point, goods withdrawn by partners for personal use. 16, there are two adjustments: unrecorded purchases and second, unrecorded sales. How these entries are to be passed. 17, there are 2 points: capital expenditure included in revenue expenditure and vice versa. Revenue expenditure included in capital expenditure. 18, bills receivable dishonored. 19, bills payable dishonored. Then 10th, deferred expenses of advertisement paid for 5 years. How these entries are recorded with examples I have shown you. Now let us continue with the 21 and 22nd points, and then we can continue with the other hidden adjustments given in trial balance. There are 7 points. Let us continue how much we can, whether we can complete this in this session. Revenue receipts included in capital receipts. Example, sale of goods included in sale of furniture. The entry is add to sales on credit side of trading account and add to the furniture on the asset side of the balance sheet. Now let us see how these entries are made. I will show you the examples with working. Okay, now all these adjustments we learned from the beginning. See, like this, closing stock, all this we have learned. I've shown the working examples in the trading, how the entries are passed in trading profit and loss account and balance sheet. The two effects are given. Up to here we have completed. Now the 21 adjustment, 21st point, revenue receipts included in capital receipts. Example, sale of goods included in sale of furniture.
Now let revenue receipts means the sale of this goods is taken as for example 15,000. Revenue receipts, sale of goods, say it is 15,000. Now the debit effect is furniture and fixture as per ledger, if suppose it is a 5,19,000, add to the included in furniture account, that means 15,000. So what we will do, the debit effect is add to the furniture account, then credit effect is add to the sales in the trading account. Sales कहाँ लेता है, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये सेल्स लेता है. सो व्हाट वी विल डू, एक साइड में एक इधर क्रेडिट बढ़ गया, इधर डेबिट बढ़ गया, दैट मीन्स इक्वल हो गया. 15,000 इधर बढ़ गया, 15,000 इधर बढ़ गया, दैट मीन्स दैट इज़ द एंट्री. सो नाउ लेट अस सी हाउ द एंट्री इज पास्ड. नाउ सी सेल्स इधर लिया था और अनरिकॉर्डेड सेल्स लिया था, देन द 21st एंट्री adjustment entry, sales taken as capital sale of furniture and fixture. This is revenue sales means sale of finished goods. तो ये जो मटेरियल जो नॉर्मल सेल्स का जो है वो आइटम्स जो इधर का जो है ना बाय मिस्टेक और फर्नीचर एंड फिक्सर में लिया था, तो क्या किया, इसको इधर ऐड किया. ओके, तो इधर ऐड किया और लेस रिटर्न्स, तो इतना ये आ गया, 15 इधर ऐड किया है. नाउ लेट्स सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या किया, द सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर. तो ये इधर से माइनस हो गया था, समझो इधर से सेल हो गया मीन्स इसमें से माइनस हो गया था, वो ऐड बैक करना पड़ेगा. तो इधर 21st एंट्री नंबर वो ऐड टू द सेल अकाउंट. ठीक है, अंडरस्टूड नो. 5,90,000 आ गया, वो सेल उसका इफेक्ट आके, तो उसको सेल्स ऑफ 15,000 ऐड करके उसको 6,05,000 हो गया. ओके, अंडरस्टूड ना. उसका एंट्री का इफेक्ट है ना, थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं और कुछ डिटेल में बताएगा. ठीक है, लेट अस सी यू गॉट दैट एंट्री नो, मीन्स ऐड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ऐड कर दिया, सी क्रेडिट साइड. और उसका डेबिट इफेक्ट इधर किधर आ गया, बैलेंस शीट में, इधर एसेट्स में ऐड कर दिया. ओके, नो वर्किंग थोड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए मैंने इसको आपको क्लैरिटी के लिए इधर बता रहा हूँ. सो बिफोर एडजस्टमेंट्स क्या था, 5,09,000 लेस रिपेयर्स. ओके, लेट अस सी हाउ द एडजस्टमेंट्स आर कमिंग. ये इधर ऐड कर दिया और नाउ इधर ट्रेड फर्नीचर एंड फिक्सर का जो एंट्री जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट जो है वो मैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिया, कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स में लिया, या रेवेन्यू रिसीट्स का कैपिटल में लिया, और उल्टा ये सब जो है वो मैं फर्नीचर फिक्सर करके अकाउंट में लिया है. ये मैं आपको फाइनली एक मैं ये बताएगा. ठीक है, क्या इसका एडजस्टमेंट कैसा किया है करके. ठीक है, सो लेट अस सी. ये हम लोग ने फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट इधर क्लियर करके ही जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर ने 6 लाख और ये जो किया है, ये सब एंट्रीज मैंने जो 17th एडजस्टमेंट एंट्री में बताया था. सो फर्नीचर एंड फिक्सर ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 लेस रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर 15,000. इधर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में इधर आ गया था. फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 17 सी, डेबिट इफेक्ट इधर 17. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में ये जो 80,000 में जो था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 80,000 था, उसको इधर हम लोग ने ये जो डेबिट की ऐड सॉरी लेस किया. इधर लेस किया, इधर ऐड किया, इधर लेस किया. ठीक है, इधर लेस किया. ओके, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सी, इधर लेस किया. ठीक है, और 17th एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ से लेस किया 70,000 और बैलेंस शीट में इधर ऐड कर दिया. ठीक है, सो यहाँ से ये रिड्यूस हो गया और यहाँ ये ऐड हो गया.
ओके, दोनों असेट साइड का इफेक्ट होता है। डेबिट साइड, ये इधर का डेबिट साइड का इधर ये को एक रिड्यूस हो गया, वहाँ ये जो पहले जो नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या किया था, इधर क्रेडिट साइड में इधर बढ़ गया, क्रेडिट साइड इट इज़ इंक्रीज 15,000, और सेम वे यहाँ क्रेडिट साइड में बढ़ गया तो डेबिट साइड में भी बढ़ना चाहिए, डेबिट साइड में इधर ये बढ़ गया। ओके 21 एंट्री। नाउ इधर डेबिट साइड में रिड्यूस हो गया, ठीक है, 17th एडजस्टमेंट एंट्री, डेबिट साइड में इधर रिड्यूस हो गया, इधर डेबिट साइड में रिड्यूस किया, इधर डेबिट साइड में इधर बढ़ गया। दैट मीन्स एक साइड में एक डेबिट कम होके दूसरा डेबिट बढ़ गया, ठीक है। सो दैट इज़ अ एंट्री। नाउ द थिंग इज, नाउ रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर मीन्स ये 15,000 जो है, 15,000 इधर ऐड बैक कर दिया, इधर लेस किया, इधर ऐड किया, इधर लेस किया, ठीक है। तो वो जो एंट्री है देखो 17 सेकेंड एंट्री ऐड, इधर रेवेन्यू ये जो इसमें से ये जो रिड्यूस करके जो है उसमें ऐड कर दिया, दैट मीन्स 85,000। नाउ उसका इधर लेस किया तो उधर ऐड किया बैलेंस शीट में, यहाँ रिड्यूस की ऐड किया तो वहाँ रिड्यूस करेगा। देखो फॉर एग्जांपल लेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दैट मीन्स वो टैली होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट टैली होना चाहिए। तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ का यहाँ कुछ हो गया तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगा, तो विल नॉट, तो पूरा मार्क्स चला जाएगा। Okay, so you have to just make sure that the entries passed are, if one debit effect is given then corresponding उसका credit effect भी आना चाहिए। So now ये सब entries means for example ये जो adjustments, इतना adjustment जो है, ये जो इतना adjustment जो है रिपेयर्स का, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका एग्जांपल मैंने जो बताया। और उसके अलावा ये जो 21 एंट्री एडजस्टमेंट नंबर, ये जो है रेवेन्यू रेसिस इंक्लूडेड, तो ये जो एंट्रीज का फुल हम लोग ने इधर बताया है। ओके 17, 1, 2 एंड 21, these are the entries, और उसका सेम उसका इफेक्ट इधर 17, 1 एंड 2 एंड 21, ये जो इसका एंट्रीज कैसा, जो लेजर का इफेक्ट कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है टोटल 6,500 बैलेंस 5,90,000, इसका क्या होता है 5,19,000 बाई सेल्स, ये जो एंट्री बिफोर एडजस्टमेंट्स ऐसा होता है, तो दैट मीन्स 5,90,000। ये जो ओपनिंग बैलेंस 5,90,000 था और जो क्लोजिंग बैलेंस भी 5,90,000 हो जाता है, तो उसको ऐड बैक कर देता है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस इधर का जो ले लिया है, जो आफ्टर एडजस्टमेंट्स 5,90,000 ये ले लिया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या किया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 15,000 यहाँ ये किया है सेल्स, सॉरी हाँ ये था सेल्स का था। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम लोग ने जो लिया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिया था, ठीक है। ये सी दिस इज़ अ क्रेडिट इफेक्ट। तो वो फर्नीचर एंड फिक्चर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर एंड फिक्चर में उसको उतना ऐड किया है, तो वो देखो एग्जांपल वो हम लोग ने इधर ऐड किया। ओके नाउ रिपेयर्स ऑफ ये जो है वो 10,000, this 10,000 is a debit item. Let's see, is a debit item, debited. Okay now और बैलेंस शीट में ये जो है ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए डेबिट आइटम, वो भी इधर लिया है, ठीक है, दिस इज ए डेबिट आइटम। एंड इसमें ये जो लेस 15,000 जो है दैट इज ए क्रेडिट आइटम। ओके सो क्रेडिट आइटम हम लोग इधर ले लिया है, ठीक है, एंट्रीज। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ इसका इफेक्ट आते टाइम में मीन्स जो डिप्रिसिएशन, सपोज इफ द डिप्रिसिएशन इज नॉट टेकन इट इज़ 6 lakhs। ओके तो अगर डिप्रिसिएशन लिया तो 6,000, 5,40,000। बैलेंस शीट देखो 5,90,000 ऐड 15,000 सेल्स, जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स का जो रॉन्गली जो लिया था वो 21 एडजस्ट नंबर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करके फर्नीचर एंड फिक्चर में ऐड किया है, तो दिस 15,000
सो 6,05,000 हो गया। एड कैपिटल परचेस जो रहता है, वो जो 2 चेयर्स जो लिया था वो हम लोग बाय मिस्टेक उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लिया था, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से निकाल के इधर कैपिटल परचेस में ऐड किया, तो ये ऐड हो गया, और तो टोटल 6,15,000 हो गया। लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या लिया था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिया था, उसको 15,000 ये था, तो वो ये माइनस करने के बाद में 6 लाख आ गया। तो ये 6 लाख, तो 6 लाख का 6 लाख आ जाएगा, देखो 6 लाख बैलेंस टू बी कैरिड ये। और उसमें ये जो 10% डिप्रिसिएशन हम लोगों ने दिया है, वो डिप्रिसिएशन एंट्री पास करेगा, तो 5,40,000 सी बैलेंस शीट देखो 5,40,000 आ जाएगा। ओके, दिस इज द इफेक्ट। नाउ लेट अस सी, so I think this is understood now here. Okay, now one more thing, sales account वो भी आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा आपका क्लैरिटी के लिए। 18 lakhs ये लिया था, 18 lakhs क्रेडिट, और अनरिकॉर्डेड सेल्स, सॉरी अनरिकॉर्डेड सेल्स 1,20,000 वो भी, और देन ये जो फर्नीचर का जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम लोग ने लिया है 15,000, तो वो 15,000 इधर लिया, तो 15,000 टोटल कितना है कैरी टू ट्रेडिंग अकाउंट 19,35,000। सो एडजस्टमेंट हम लोग इधर ही डायरेक्टली किया है। मैं आपको ये जो लेजर इफेक्ट दिखाया ये ऐसा होता है करके एंट्री पास करेगा, तो सो 19,30,000। इफ़ देयर इज एनी रिटर्न्स, तो रिटर्न्स को इधर ले लेते हैं, तो उतना माइनस करके बाकी का आ जाएगा। रिटर्न्स इधर हम लोगों ने लिया नहीं है, इसके लिए 19,35,000, यहाँ भी 19,35,000। ओके, नाउ ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में क्या इफेक्ट आ गया वो भी ज़रा देख लेता हूँ। ओके, टोटल कितना था 80,000 था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो बुक बैलेंस के अनुसार 80,000 था, 80। ओके, सो हम लोगों ने 80,000 का ये जो है ये ले लिया है। नाउ ये जो 2 चेयर्स का जो इधर लिया था वो बाय मिस्टेक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लिया था, तो उसको उतना माइनस किया, तो क्या किया है उसको इधर माइनस किया, तो माइनस मीन्स ये जो डेबिट इसमें से ये जो क्रेडिट करेगा तो उतना माइनस हो गया, इसका इफेक्ट ये हो गया ना, दिस माइनस दिस आ गया। देन क्या किया है, फर्नीचर एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस रॉन्गली टेकन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना था 15,000, वो 15,000 क्या किया है, तो इधर जो ऐड किया, तो डेबिट इफेक्ट उधर ऐड फर्नीचर एंड फिक्सचर मीन्स रिपेयर्स को जो इसमें लिया था, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000। जस्ट सी हियर ट्रेडिंग अकाउंट में 85,000। ठीक है, सो दिस इज द वे दिस एडजस्टमेंट्स आर वर्किंग। नाउ hope you have understood this now. Now I will show you रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो है वो 15,000 इधर ऐड ले लिया। ठीक है, और रिपेयर्स एंड जो चेयर्स का लिया था वो इधर ले लिया, और जो रेवेन्यू रिसीट्स को कैपिटल में जो लिया था वो वहाँ क्रेडिट करके यहाँ डेबिट किया है, तो टोटल कितना के फर्नीचर एक्सपेंडिचर में 6 लाख। ओके, और 6 लाख में से जो डिप्रिसिएशन लेने के बाद में 5,40,000 आ गया। ओके, दिस एंट्री इज क्लियर। ओके, 21 एडजस्ट नंबर एंट्री क्लियर हो गया। होप देयर इज़ नो डाउट। थोड़ा डिटेल में गया, फॉर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके थोड़ा डिटेल में गया, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, समझना चाहिए बहुत अच्छा तरह से। ठीक है, थोड़ा मन लगा के थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, किधर का इफेक्ट कहाँ लिया है, वो अगर समझ में आ जाएगा, ये आपका फ्यूचर में भी बहुत इफेक्ट आ जाए, बेनिफिट हो जाएगा। Okay, now second, 22nd entry number, commission to partners as percentage of profit, gross profit, percentage of profit, either to gross profit or net profit. Okay, say gross profit is 8,10,000, commission 5% is equal to 40,500. Now partner A gets 20,250, partner B gets 20,250. If it is on sales, then the commission shall be given to partners who brought the sale.
इफ द अगर सेल्स के ऊपर कमीशन अगर रखेगा तो कौन सा पार्टनर सेल्स लाया है उसको कमीशन जाएगा, बराबर ना। इफ़ इट इज़ ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट तो जो अपना पार्टनरशिप डीड में जिसको बताया है उनको वो प्रॉफिट का कमीशन जाएगा। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में 2 पार्टनर या 4 पार्टनर या कितना भी पार्टनर रहने दो, उसमें से सपोज कुछ पार्टनर्स को कमीशन जाएगा, कुछ पार्टनर्स को सैलरी जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। या नहीं तो सबको अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली, तो या नहीं तो परसेंटेज ऑफ देयर रेशियो, या नहीं तो कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज बताया रहेगा, उसके अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। If it is on the net profit allowed to the some partners of or all partners, if it is on the gross profit it may be allowed to some partners, means जिसको दिया है allowed है। for किसी के लिए फॉर एग्जांपल किसको कमीशन अलाउड है, किसी को सैलरी अलाउड देता है, तो ऐसा कुछ होता है। या नहीं तो सब पार्टनर्स को इक्वली होता है, और एज पर द रेट्स स्टिपुलेटेड इन पार्टनरशिप डीड। Here, for example, we take commission shared equally to both the partners. The debit effect will come in profit and loss account. क्योंकि ये जो किसका एक्सपेंडिचर है, फर्म का एक्सपेंडिचर है। कमीशन जो सेल्स, इवन इफ इट इज़ ऑन पेड ऑन सेल्स, it is an expenditure to the firm. If it is on a gross profit or net profit, it is a expenditure to the firm. So debit effect will come in profit and loss account, and credit effect will be shown in the balance sheet or in partner's current account, if not paid on 31st March. अगर 31st मार्च तक, अभी आजकल क्या है, 31st मार्च को एक ये सब कैलकुलेट करके इतना ये है करके कैलकुलेट करके 31st मार्च को जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने का दिन में जो लास्ट का जो एंड ऑफ द डे 31st मार्च को जितना कमीशन है वो पास ऑन किया, मतलब पार्टनर्स को, देन दिस एंट्री विल नॉट कम, इट विल डायरेक्टली गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द second effect will reflect in the bank account or cash account, whether it is paid in mostly अभी चेक से या नहीं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र, इंटरनेट बैंकिंग होता है ना, तो बैंक ट्रांसफ़र होता है। if it is paid on cash तो कैश को इफेक्ट होता है, if it is paid by बैंक then बैंक में इफेक्ट होता है। if it is not paid, if paid on 31st March, then the second effect will come in the bank or cash account, ठीक है। और अगर not paid, then this should be added to be taken to the balance sheet, और बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट में ले लेगा। अगर फिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले लेगा। सो नाउ लेट्स सी हाउ द एंट्रीज इफेक्ट इज टेकन। ओके, 22nd एंट्री नंबर, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर ए 20,250, पार्टनर बी 20,250, 40,500। अभी इसका इफेक्ट देखो बैलेंस शीट में, ऐड पार्टनर्स ए 20,250, पार्टनर बी कमीशन 20,250। अगर ये जो फिक्स मेथड में लेगा, दिस इज़ फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये मेथड जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अगर फिक्स मेथड में लेगा तो ये यहाँ ये एंट्री नहीं आएगा, उसके जगह पे वेयर इट विल कम इनटू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, कमीशन 20,250, पार्टनर ए, पार्टनर बी 20,250, ये इफेक्ट आ जाएगा। उसको क्रेडिट इफेक्ट इधर आ गया, और इफ इट इज़ ए फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो फिर वो क्रेडिट इफेक्ट इधर आ गया, डेबिट इफेक्ट इधर आ गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ आ गया। ओके, नाउ आई थिंक द 22nd एंट्री ऑल्सो यू आर क्लियर। सी 22nd एंट्री नंबर, every word I have given each and every adjustment from 1 to 1, उसका corresponding है ना, उसका इफेक्ट दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो फॉर एग्जांपल मैंने एक एंट्री बता देता हूँ, 1 सी, और इधर क्लोजिंग स्टॉक में इधर ये ले लिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री नंबर 1, इसका सेकंड इफेक्ट गया है बैलेंस शीट में, देखो तो सी एंट्री नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट इफेक्ट इधर ट्रेडिंग में, इधर क्रेडिट साइड में आ गया, सेकंड इफेक्ट इधर बैलेंस शीट में डेबिट इफेक्ट इधर आ गया, एसेट साइड में आ गया। सेम वे अभी देखो एंट्री नंबर 2,
तो इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी 6 lakhs इधर ले लिया है, इधर डेबिट इफेक्ट इधर ले लिया है, ठीक है. क्रेडिट इफेक्ट इधर बैलेंस शीट में देखो सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर ले लिया है. सो दिस एंट्रीज आर नो टोटली मीन्स कोरिलेट किया हुआ है. एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, ऑल दिस. तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ मिलेगा. एक डेबिट साइड का रहेगा तो एक क्रेडिट साइड में रहेगा, एक क्रेडिट साइड का रहेगा तो उधर डेबिट साइड में या एसेट साइड में रहेगा. यहाँ का डेबिट साइड में रहेगा तो यहाँ इधर प्लस माइनस हो सकता है, या नहीं तो डेबिट का क्रेडिट साइड में उधर असेट्स में लायबिलिटी साइड में लेगा, या लायबिलिटी साइड का रहेगा इधर क्रेडिट साइड का रहेगा तो उधर असेट साइड में लेगा. सो दिस करस्पॉन्डिंग है ना, मैचिंग करके मैंने ईच एंट्रीज को कनेक्ट किया है, कोरिलेट किया है, ठीक है. सो नाउ आई थिंक फ्रॉम एंट्री नंबर 1 to adjustment entries from 1 to 22 we have completed. Now let us start with adjustments, hidden adjustments. Okay, let us see. So there are 7 adjustments. So I have continued with this is a 22, means all these 7 adjustments it is written here, 7 adjustments. But for your reference, because it is given now 22, up to here it is given 22. Now for your reference how these entries are given, I have written here. Continue with 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 up to. So now we can start with this hidden adjustments. इसका इफेक्ट कहाँ लिया है, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट कहाँ लिया है, वो सब में आप बताएगा. ओके. So now I think let us start again to just recapitulate your memory, just brush up your memory what we have done in the important adjustments. 22 adjustments we have seen: closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses. Just you have to see first effect and second effect, and that effects are matched and with numbers, entry numbers, adjustment entry numbers in the trading account and profit and loss account. So you can just see that. Okay. So closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, income received in advance, income receivable, bad debts, provision for doubtful debts, reserve for discount on debtors, depreciation, interest on capital, interest on drawings, interest on loan taken, interest on investments or loan given, insured goods destroyed by fire, uninsured goods destroyed by fire, goods stolen, goods distributed as free samples, goods withdrawn by partners for personal use, unrecorded purchases, unrecorded sales. These are important. I just understand this. Capital expenditure included in revenue expenditure, revenue expenditure included in capital expenditures. For that you must know what is capital expenditure and what is revenue expenditure. Everything is explained in the beginning. So you do just read it again. Okay. Now the entry effects are also means given with example, how that entries are passed. Now then bills receivable dishonored, bills payable dishonored, deferred expenses of advertisements paid for 5 years, revenue receipts included in capital receipts, example sale of goods included in sale of furniture, then commission to partners as percentage of gross profit or sales. So ये सब मैंने आप लोग को टोटल बताया है. Now we will start with adjustments. These important adjustments what we have given is, first you should know revenue item, capital item, revenue expenditure, capital expenditure, balance sheet item, whether it is a debit side or credit side, asset side or liability side, whether it is a trading item or why means see whatever entries you pass as I means this revenue expenditure or revenue income, revenue receipts. So income or revenue, when whatever you do, the finally if it is everything is correct, then your net profit will come right. But why I am telling you to just identify whether it is a trading item or a profit and loss item, because if it is if the trading item is taken to the profit and loss account part, then the GP will get affected. Vice versa, a trading item प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम में लिया या प्रॉफिट एंड लॉस आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में लिया, देन अगेन देन ऑल्सो द जीपी विल गेट अफेक्टेड. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
should not get changed. So वो उसको जो एक्चुअल प्रॉपर होगा तो व्हाट इज़ द एक्चुअल हैपेंड वो समझने के लिए वो ये पूरा आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है. तो उसके हिसाब से आप समझ के जाओ. ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ये एंट्रीज और इसके इफ़ेक्ट, आइटम्स को आइडेंटिफाई करना क्या है कैसा है, उसको एंट्रीज कैसा पास करना, कौन सा इफेक्ट में लेना, अगर एक बार ये समझ में आ जाएगा, ये थरो हो जाएगा, देन डेफिनेटली ये आपका फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा. दैट इज़ सो आई गारंटी यू दैट मीन्स देन योर ऑल द मीन्स लेवल्स नो मीन्स आगे अगर चलते जाएगा एडजस्टमेंट्स आपको बहुत ईजी हो जाएगा. आपका जो CA का जो बेसिक स्टेप्स इधर ही बन जाएगा. ओके, CA या MBA या कुछ भी रहेगा, आपका जो अकाउंट्स में जो जो ये होता है उसका जो पूरा स्टेप क्लियर हो जाएगा. सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड स्टडी इट. Okay, now we will start with the next lecture as a hidden adjustment given in trial balance. Today खाली दो ही explain किया है to just make you understand better and more clear. So now let us start in the next class the hidden adjustments given in trial balance. Okay, so this we will complete in one lecture, one session. Okay, because almost the same are already explained in the first part. For example, salaries, rent paid, all these things now already and adjustments, these are already discussed. So just to repeat it, only a few points are there, just very few, two or three or four points needs to be explained further. Otherwise almost everything is one and the same what we have already explained. So let us we will see the hidden adjustments given to trial balance in the next class. Okay, I don't want to make you more stressed or more confused. Make study step by step. Okay, understand what you study it thoroughly. That is a more important thing. Read again and again, watch again and again. You can drag back, you can see how the entries are given, you can practice, then make a strong base. Okay, now let us conclude here in this session. Then we will continue with the next lecture, other adjustments. Then we will finish it there. Okay, the next class, this chapter, this part, adjustments entries. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again, because I want my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark. It's possible because a few of my students in the ISC and ICSE board 10 standard means this commerce students got 100% marks in account as commerce, and a few of the students of HSE, they also got good marks, 98 100% marks, because when they go they watch thoroughly, study and practice according to the instructions, and I will motivate and I will just explain, I will make their doubts clear, and then definitely they can score full marks. Few of my students has already scored. They have 10% marks holders. So it is possible. So most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. वो सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि स्टडी करना ये सब करना ये जो होता है आपका फ्यूचर के लिए, मीन्स फॉर योर फ्यूचर. इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग विद बीकॉम तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए, वेदर फॉर MBA, CA और वट एवर इट इज़, यू हैव टू गो फॉर दैट. तो MBA, CA, CMA, CFA वट एवर जो आगे का जो आपका जो फ्यूचर का जो हायर एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और लाइफ के लिए जो आपका प्रोफेशन में भी ये बहुत सपोर्ट दे देगा. तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना दीजिए. प्लीज़ रीड अगेन एंड अगेन, लर्न एंड प्रैक्टिस टू अचीव योर लाइफ्स गोल. लाइफ में जो एक गोल रखे, जो आप मेहनत कर लीजिए, डेफिनेटली बन जाएगा, हो जाएगा. हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर फॉर अ बेटर इंडिया. सब जो भी है वो आपस में हेल्प करके मीन्स आगे बढ़िए. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियोस टू रीच मोर एंड मोर पीपल, सो दैट many students and public can take the benefit. Students can take the benefit means 11th and 12th students I am just focusing, because I have some other activities also. So I am just focusing and just training this basic thing for to make a base, strong base to the 11th and 12th students, commerce students, so that they can build up a very strong base and go further, and talented young
students can be generated, young generation can be created. Why I'm telling you the public, that public also can take the benefit, because I am uploading other videos like most useful videos for classes for general public, for those who are doing accounts and accounting jobs and other things, financial activities sector, other that type of videos. For example, simple to simple, what is an invoice, how to generate an invoice, how to make the entries. These are things, how to what is journal entries, books of accounts, posting, etc. All these things, these are, and gradually means cash flow, different types of cash flow, funds flow, then other project making, financial technical project making, financial project making, etc. Means all these types of things I am just uploading. So for that will be helpful for them. Related to finance and accounts I am uploading, so that will be helpful to them. So I hope you will take it serious and share the videos as much as possible, and support each other. Thank you for your attention.